creating any type of design. Okay, these have different types of tools, different types of options for creating any type of design or a document. Okay, we have different types of intents, web, print, and digital publishing. Okay, next is number of pages, start pages, how many pages you need. Next is next is page size. Okay, letter, legal, tabloid, letter half, legal half. Okay, these are different types of page sizes: A5, A4, A3, B5, depending upon your design. Next is US business card. This is a design for a visiting card. Okay, US business card, ये जो size रहेगा इसका business card से मतलब जो हम लोग विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं उसके हिसाब से उसका साइज रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क जो डीवीडीज वीसीडीज पहले हम लोग यूज करते थे, अभी तो पूरा उसका जमाना चले गया है. अभी हम लोग डायरेक्टली मेमोरी कार्ड से वो मेमोरीज उतने यूज करते हैं. यूजिंग द मेमोरी कार्ड्स we store any of the files using the memory cards. ठीक है, फिर भी अगर if you need a compact disk design, then you have a ready-made page size for that compact disk. Okay, or you can set a custom page size according to your requirement. ठीक है, select करना है PO. PO is a unit for measurement of picas. ठीक है, picas is the measurement which is used for designing not only maximum in this in any of the document but in some of the fields. ठीक है, कुछ fields में हम लोग पिकास यूनिट यूज करते हैं, but maximum in this we use inches और millimeters. Okay, maximum जो डिजाइन के साइज रहते हैं वो inches और millimeters के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं. ठीक है, these are number of columns. Number of columns मतलब जो horizontal vertical रहेंगे, vertical, that will be the columns. Next is margins. With what size of margins will you use for designing a document? And margins should not overlap with the text and overlap with the images or any of the elements. ठीक है, और margin को एक proper alignment रहता है जहाँ पे आप लोग को कुछ भी डिजाइनिंग या फिर टेक्स्ट नहीं रखना पड़ता है. नेक्स्ट इज ब्लीड एंड स्लग. ब्लीड एंड स्लग इज अ कटिंग एरिया. ठीक है, कटिंग एरिया उस एरिया के अंदर ना आपका इमेज आना चाहिए ना आपकी कोई भी डिजाइन आना चाहिए. ठीक है, दैट इज अ कटिंग एरिया. मतलब वो उतना जो एरिया है आपका प्रिंटिंग के बाद उतना कट होने वाला है. ठीक है, दैट इज द एरिया. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन, इन द ओरिएंटेशन वी हैव लैंडस्केप एंड द पोर्ट्रेट डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन. ठीक है, लैंडस्केप इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. लैंडस्केप कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. एंड ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट अगर हम लोग लिया तो दैट इज अ वर्टिकल साइड. ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ. नेक्स्ट वी हैव दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, इन दिस वी हैव दिस इज द वर्क एरिया और दिस इज अ पेज. ठीक है, दिस इज पेज. द डायमेंशन विच यू हैव सिलेक्टेड, दैट डायमेंशन विल अपीयर इन दिस पेज, इन दिस लाइन. ठीक है, ये जो लाइन है आपको वॉयलेट लाइन दिख रहा है, ब्लू लाइन, ब्लूइश वॉयलेट लाइन जो दिख रहा है उसके अंदर आपको डिजाइन करना है. दिस इज द पेज साइज. ठीक है, इफ यू प्रेस W इट विल शो यू जस्ट द प्रिंट एरिया. ठीक है, मतलब प्रिंट के अंदर कितना एरिया प्रिंट होने वाला है दैट इट विल शो यू. दिस इज अ पेस्ट बोर्ड. जो साइड में आपको एरिया दिख रहा है दैट इज अ पेस्ट बोर्ड. इसको आप लोग अल्ट प्लस स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो. ठीक है, व्हेन यू प्रेस अल्ट एंड स्क्रॉल यू कैन जूम इन जूम आउट. अल्ट स्पेस बार प्लस लेफ्ट माउस बटन इज टू पैन. ठीक है, पैन कर सकते हो आप लोग इसको. अल्ट प्लस स्क्रॉल जूम इन जूम आउट. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज अ स्केल. ठीक है, दिस इज अ मेजरमेंट स्केल. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल दोनों भी आपको मिल सकते हैं. Next, if you right click on the corner of the scale or the zero axis of the scale, you will get different types of measurement units. ठीक है, you have different types of measurement units. इसके अंदर you can use inches, millimeters, centimeters depending upon your designs. ठीक है, pixels में भी आप लोग ले सकते हो, points में ले सकते हो. ठीक है, but maximum we use inches और millimeters. ठीक है, अभी इसको मैं inches में convert करता हूँ. Now this is the inches scale. 16, 12, 8, 4, 0, 4. ठीक है, ऐसे इंचेस आएंगे इसके. Next, this is the menu bar. Okay, this is the menu bar. This properties window. We have the different types of tool properties. ठीक है, ये सिलेक्शन टूल मैंने यूज किया है. इसके सिलेक्शन के प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगे. सब सिलेक्शन के प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगे. पेज के प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगे. ठीक है, if you select any of the page tool you will get different types of properties. ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर पेज टूल सिलेक्ट किया आपने you will get different types of measurements which you have used for your page. ठीक है,
देखो यहाँ से भी आप लोग अगर बीच में आपको साइज चेंज करना है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। सी सी these are different types of page sizes. लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव विद पेज और शो विद मास्टर पेज ओवरले, ठीक है, ऐसे रहेगा इसका। नेक्स्ट वी हैव द गैप टूल, ठीक है, गैप टूल है। उसके बाद है यू हैव द कंटेंट कलेक्टर टूल, ठीक है, यू कैन कलेक्ट द कंटेंट्स। अब इसका भी दिखाता हूँ मैं आपको यूज क्या है। सो जस्ट चेंज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द पेज, लेटर, लेटर साइज। Now, if I create any text, this is the text tool. Okay, if I right click and I will place a placeholder text, fill with placeholder text. ठीक है, यहाँ पे एक text box edit किया मैंने, Alt plus drag to create a duplicate. ठीक है, Alt plus drag. अभी ऐसे कुछ मैंने text create किया है, but I have to adjust the gap between these letters or between these boxes. ठीक है, तो उसके लिए gap tool है, डायरेक्टली आप लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हो इसके हिसाब से। See, ऐसे एक लाइन दिखेगा आपको। You can increase and decrease the gap between the boxes or elements used in your document. See, ऐसे भी horizontal और vertical gap between the documents, ठीक है। Height is 0.6 inches. It is highlighting the height of your document. See, height 0.6 inches. आपको अगर measurement भी करना रहेगा किस चीज का, मतलब किसी ने अगर आपको क्लाइंट ने अगर बोला कि आई नीड अ मार्जिन ऑफ 0.5 इंचेस or 0.6 inches, then you can select it and you can measure the distance. See, now this is width is 0.6, it is increasing 0.9, 1, 1.2, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होगा। Now it is 0.6 inches, I need 0.5, ठीक है, this is 0.5. Next you have the content collector tool, ठीक है। If I have imported any of the text or the images, ठीक है, ऐसे कुछ इमेज मैंने इंपोर्ट किया है इसके अंदर। Now if I click on this, you have a content collector tool, ठीक है, इसके अंदर you can collect different types of contents, ठीक है। अगर क्लिक करूंगा मैं, it will collect the contents, ठीक है। नेक्स्ट मतलब वो क्या करेगा, सारे कंटेंट यहाँ पे कलेक्ट करके रखेगा। इफ यू वांट टू यूज दोस कंटेंट इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर दूसरे डॉक्यूमेंट के अगर अंदर आपको यूज करना है वही कंटेंट, then if I click on new document, कंटेंट कलेक्टर, ठीक है, कंटेंट अभी मैंने कलेक्ट किया है वो कंटेंट कलेक्टर के अंदर। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है, सेम एलिमेंट्स आई हैव टू यूज इन अ न्यू डॉक्यूमेंट, और सेम इमेजेस, कोई भी अगर इमेज आपको कंटेंट में से यूज करना है, देन यू कैन ड्रैग इट टू द कंटेंट। नेक्स्ट यू कैन एक्सपोर्ट इट, ठीक है। सी, इसके अंदर ऐसे आप लोग स्टोर करके रख सकते हो आपके एलिमेंट। दिस इज अ कंटेंट कलेक्टर टूल। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और द टाइप टूल। यू हैव टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स टू क्रिएट type, insert with placeholder text. This is the second option to create a dummy text, or you can directly add any of the text. Yeah, I have added any of the text. To increase and decrease the text size, it is Control Shift open and close brackets, ठीक है, open and close diamond brackets. This is a shortcut, or you can directly go to the properties window और प्रॉपर्टीज सेक्शन इन योर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर से आप लोग टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। दिस इज अ फॉन्ट फैमिली, ओके। Minion Pro has this many font families. This is a font, this is a font family, and font is divided into 2 sections, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है how many types of fonts are there, ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि there is a Minion Pro font, Times New Roman, Arial,
एजेंसी, ब्रॉडवे, ये सब फॉन्ट्स नहीं है, ठीक है. दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है. बट इफ यू वांट to show out the category in which fonts are divided, we have only two categories, that are serif and sans serif fonts, ठीक है. serif and sans serif fonts आपको दिखाता हूं मैं. serif and sans serif fonts, ठीक है. Now I have these two text boxes, ठीक है. एकदम बेसिक डिफरेंस है फॉन्ट्स के अंदर. See, I will change the color of the border, increase the border size, okay. Now, in which we have the extended edges of any of the font type, that is a serif font, ठीक है. ये जो रहेगा, it will be the serif font. Serif fonts have the extended vertex और extended sides, ठीक है. उसको हम लोग serif fonts बोलेंगे. And these are the sans serif fonts, ठीक है. Serif fonts, I will type that. Serif fonts, these are the serif fonts. And next we have the sans serif fonts. We'll extend the text box. इसको भी मैं ठीक है. This is the difference. These are the two categories in which fonts are divided. This is a serif font and this is a sans serif font. ये दोनों जो fonts है, categorized according to the appearance, ठीक है. उसका जो भी appearance रहेगा उसके हिसाब से आपको categorize करना पड़ेगा, whether it is a serif or a sans serif fonts, ठीक है. Sans serif fonts are maximally used for designing, ठीक है. मैक्सिमम जो डिजाइनिंग रिलेटेड जो पर्पस रहता है हमारा, उसके अंदर हम लोग sans serif fonts मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है. सिर्फ वही यूज करना है ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है. बट मैक्सिमम वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ sans serif fonts फॉर डिजाइनिंग. एंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस यू यूज serif fonts, ठीक है. ये डॉक्यूमेंटेशन रहता है आपका, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपके एडमिशन फॉर्म्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं, या फिर कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसके अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके अंदर यू कैन यूज serif font. मैक्सिमम तो serif font ही होता है, बट यू हैव द डिफरेंट फॉर्म्स which also use sans serif fonts. But if you want to categorize, okay, if you want to categorize, you can show it as a serif font is used for documentation or legal purpose, and sans serif fonts have the designing purpose, ठीक है, of creation. इतना difference है दोनों fonts के अंदर, ठीक है. I will just ठीक है, ये डिफरेंस है. नेक्स्ट आई हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स. अभी इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे, यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है. इफ यू होल्ड द
लेफ्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन, जहां पे भी आपको ऐसे छोटे छोटे एरोज दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे एरोज, सो इट हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, इट हैज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन विच यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर अ सिंगल टूल, ठीक है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर अ सिंगल टूल। इसके अंदर भी टाइप एंड टाइप ऑन पाथ टूल ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट you have the line tool, तो बेसिक लाइन ही है सिर्फ, ठीक है, इसको क्रिएट करके you can increase and decrease the stroke, you can change the colors, you can increase and decrease the stroke size, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल जो हमारी लाइन जैसे रहती है वैसे टाइप में आप लोग क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, और पेन टूल, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे इट विल रिप्रेजेंट अ पेन टूल, ठीक है, बट इफ यू ओपन द ड्रॉप डाउन मेनू इट विल शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ऑप्शंस फॉर पेन टूल, ठीक है। अभी पेन टूल मैंने अगर यूज किया, creating different types of shapes, ठीक है, and connecting the shapes, I have connected these shapes, ठीक है। For sub selection, if I click on this, I will get different types of movement options, ठीक है, arrows से मैं move कर रहा हूँ, you have to select the anchors, these are the anchors, if you want to change the curve you can select the handles, ठीक है, these are the handles for any of the vertex, देखो ऐसे handles रहेंगे, you can change the shape using this sub selection tool. Next you have add anchor point tool, अभी anchor point हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, जहाँ पे I need extra curve और extra editing, ठीक है, अगर मुझे इतना एरिया एडिट करना है या फिर मुझे थोड़े से चेंजेस चाहिए इतने एरिया में, I will add an anchor point, I will take a sub selection, ठीक है, I will select that anchor point and I can move that, I can change the shape of that curve, ठीक है, ऐसे कुछ मैं शेप इसका चेंज कर सकता हूँ while adding anchor point। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो इससे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है, डिलीट द क्रिएटेड एंकर पॉइंट, इसके अंदर क्या है, डिलीट, सी इफ आई क्लिक ऑन दैट पॉइंट इट विल डिलीट दैट एंकर पॉइंट, मतलब उसके साथ जो हमने चेंजेस किए थे कर्व के अंदर, सो इट विल डिलीट दैट एंकर पॉइंट सो दैट द कर्व विल बी रीअरेंज्ड टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, मतलब उसके अंदर अगर हम लोग ने एंकर पॉइंट ऐड नहीं किया है तो कर्व जैसे रिप्रेजेंट होगा इट विल बी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द डायरेक्शन पॉइंट टूल, ठीक है, अभी अगर आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है या फिर इसके अंदर और हैंडल्स ऐड करने हैं और यू वांट टू ऐड अ कर्व इन दिस पॉइंट, so you can select this, you can add the curve in this, अगर पॉइंट भी आपका क्रिएट किया है बट यू हैव टू ऐड कर्व्स, यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ कर्व्स, ठीक है। ऐसे भी कुछ आप लोग लोगोस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आई विल जस्ट मिरर दिस, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप वर्टिकल, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल,
Control G, group, transform, click horizontal. I will select the text. ठीक है, टेक्स्ट को कलर देना है मुझे. ठीक है. निंटेंडो. व्हाट इज निंटेंडो? नाम सुना है किसी ने पहले? कंपनी है ना, गेमिंग कंपनी. यस यस, इट इज गेमिंग Nintendo कंपनी. gaming company है सर. हाँ हाँ, इट इज अ गेमिंग कंपनी. उसका लोगो ऐसे नहीं है, ठीक है, बट मुझे ऐसे ही याद आ गया वो, इसलिए मैंने ऐसे कुछ डिजाइन कर दिया है उसका. सी, रैंडमली ऑल्सो यू कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज. अगर आपके दिमाग में आता है कि वी कैन कन्वर्ट दिस शेप्स, वी कैन कन्वर्ट दिस टाइप्स ऑफ लेटरिंग्स इनटू लोगोज. ठीक है, सो यू कैन डिजाइन दिस टाइप ऑफ लोगोज. ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक लोगो, बहुत ही बेसिक है, बट यू कैन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कंपनी यूजिंग दिस, यूजिंग योर क्रिएटिविटी. ठीक है, मतलब इस टाइप के भी आप लोग लोगोस डिजाइन कर सकते हो. अभी और इसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं कलर्स के अंदर, यू कैन चेंज द कलर्स, यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट कलर्स. ठीक है, ग्रेडियंट भी कैसे अप्लाई करना है आपको, यू हैव टू सिलेक्ट दिस, यू हैव द ग्रेडियंट टूल. ठीक है, new gradient swatch. Now I will edit this swatch. ठीक है, I have created this type of gradient swatch. ठीक है, these of the colors, see these some of the colors match to the Pantone color tone. ठीक है, जो Pantone color मैंने आपको दिखाए थे. What is the use of that Pantone colors? थोड़े से फ्रेश रहेंगे, रिलेटेड टू द CMYK कलर मोड्स. ठीक है, प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर Pantone कलर्स. ठीक है, वी यूज दैट फॉर प्रिंटिंग. ठीक है, whenever you add a new color you need to create a new swatch for that color. ठीक है, जो आप लोग कलर क्रिएट कर रहे हो उसका एक न्यू स्वैच क्रिएट करो.
so that you can save that color. मतलब बार बार आपको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं. If you want to add that swatch to different types of elements, you can just click on that. ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट किया है. यहाँ पे swatch, gradient swatch. See, we have a separate section for the gradient swatch and we have a normal section for normal colors. ठीक है, gradient के आपने जो जो swatch क्रिएट किए वो यहाँ पे सेव हो गया. ऑल्सो यू कैन रीनेम इट. ठीक है, आप लोग इसको रीनेम भी कर सकते हो डायरेक्टली स्वैच को. लोगो ग्रेडियंट. ठीक है, इसका क्या मतलब, लोगो. लोगो. ठीक है, सिर्फ लोगो भी डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रेडियंट है. ठीक है, दिस इज अ लोगो ग्रेडियंट. ऐसे आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में रख दोगे इसको ग्रुप क्रिएट करके. तो क्या करता हूँ मैं, आई विल क्रिएट आउटलाइंस फॉर दिस. तो पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया है मेरा अभी. ठीक है, अभी इसको जो है, these type of logos are called iconic logos. ठीक है, जो आइकॉन हम लोग क्रिएट करते हैं, these are the iconic logos. अभी इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया है मैंने. ठीक है, आई हैव जस्ट यूज्ड अ सिंपल फॉन्ट एंड आई हैव रिटन द नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है, एक सिंपल फॉन्ट मैंने यूज किया है और उसका एक आइकॉन क्रिएट किया है, ऊपर आइकॉन. ठीक है, मतलब if the company wants to use just the icon without the name, it will be represented as their company logo. ठीक है, अभी इसके अंदर जो है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकॉनिक लोगोज है. मतलब वो आइकॉन देखते ही आप लोग रिकॉग्नाइज करते हो कि अरे हाँ, ये प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज ऑफ दैट कंपनी. जैसे कि एप्पल का लोगो है. ठीक है, सिर्फ एक एप्पल है, उसको कट किया हुआ है साइड से. उतना ही अगर आप लोग देखोगे एप्पल का लोगो, मतलब इतना फेमस है वो, उसको अगर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि दिस इज सिंबल ऑफ एप्पल कंपनी. नाइकी का लोगो रहेगा, नाइकी का. ठीक है, मतलब जो वो भी लोगो है, ऐसे राइट अगर आपको कहीं पे दिखता है तो यू विल गेट टू नो दैट इज अ नाइकी लोगो. ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज है. ऑडी का, महिंद्रा का. ठीक है, टाटा, टाटा मोटर्स, उसका एक अलग से लोगो है. वो भी लोगो जहाँ जहाँ पे भी आप देखते हो, अगर नाम भले ही लिखे ना हो उसके ऊपर, ठीक है, नाम वो लिखने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट उसका आइकॉन भी अगर आपको दिख गया तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दैट लोगो बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, दैट आर द आइकॉनिक लोगोज. नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर द कॉम्प्लेक्स लोगोज. ठीक है, कुछ कुछ लोगोज जो रहते हैं, आई विल जस्ट शो यू. ठीक है, just give me 5 minutes, just give me 2 minutes. Okay, I will show you some of the complex logos. I will show you one of the logos which I have designed for, मतलब 2 to 3 logos थे. ठीक है, तो मैंने एक कंपनी के लिए डिजाइन किए थे.
Okay, I will share you the screen again. ठीक है, फिर से एक स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। सी, दिस इज एन एग्रीकल्चरल फर्म। ठीक है, एग्रीकल्चर फर्म के लिए एकदम बेसिक लोगो डिजाइन किया है। दिस इज अ लोगो डिजाइन फॉर एन एग्रीकल्चरल कंपनी। सैट्रो एग्रो करके कंपनी का नाम था। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क, दैट इज अ ट्रेडमार्क कंपनी, उसके लिए लोगो डिजाइन किया था। दिस इज अ लेटरिंग लोगो। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है आपको लेटरिंग में सिर्फ चेंजेस करने हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, SATPRO ओ के अंदर सिर्फ उसको एक एप्पल का शेप दिया है या फिर एक फ्रूट का शेप दिया है। ठीक है, ऑल्सो आई हैव शोन एन एग्रीकल्चरल फर्म के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उसका प्लांट्स का एक सैंपल डाला है। ठीक है, दिस वाज द कलर स्कीम विच वाज गिवन टू यू बाय द क्लाइंट। ठीक है, मतलब जो क्लाइंट कलर स्कीम देगा उसके हिसाब से आपको वो लोगो डिजाइन करना है। ठीक है, सेकंड, जस्ट फॉन्ट चेंज किया है, द थीम इज द सेम। ठीक है, थीम सेम है, जस्ट फॉन्ट चेंज किया है। ठीक है, दीज आर द लेटरिंग लोगोज। ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स लोगोज। ठीक है, तो डायरेक्टली पीसी के ऊपर से मैंने फोटो निकाला है। दीज आर द कॉम्प्लेक्स लोगोज, सेम कंपनी के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो नीड आइकॉनिक लोगोज, दे ऑल्सो नीड लेटरिंग लोगोज एंड दे ऑल्सो नीड द कॉम्प्लेक्स लोगोज। ठीक है, डिपेंड्स। अभी जो कॉम्प्लेक्स लोगो है इसका प्राइस जाएगा आपका 2500 to 3000 तक। ठीक है, डिजाइनिंग प्राइस विल बी 2500 to 3000। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लोगोज मिनिमम प्राइस बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कम से कम इतना प्राइस तो आपका रहेगा। नेक्स्ट, जो आपके लेटरिंग के लोगोज रहेंगे, जस्ट अ लेटरिंग लोगो, इट विल कॉस्ट फ्रॉम 1500 to 2000। ठीक है, लेटरिंग जो लोगोज रहेंगे। नेक्स्ट, और आइकॉनिक लोगोज, जो आइकॉनिक लोगोज रहते हैं वो उसका डिपेंड रहता है द कंपनी, कंपनी के बजट के ऊपर। ठीक है, कंपनी का बजट जो रहेगा उसके ऊपर से आप लोग उसका रेट निकाल सकते हो। ठीक है, जस्ट यू नीड टू डिजाइन अ यूनिक आइकॉन। ठीक है, बहुत ही यूनिक आइकॉन आपको डिजाइन करना पड़ता है कंपनी के लिए, सो दैट द आइकॉन विल रिप्रेजेंट द कंप्लीट कंपनी। ठीक है, जो कंपनी रहेगा या फिर जो फर्म रहेगा वो कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा उसके मतलब जो उसके अंदर वर्क है, कंपनी का वर्क, उसको रिप्रेजेंट करेगा वो कंप्लीट आइकॉन। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस विच आई हैव डिजाइंड। ठीक है, दिस इज एन आइकॉनिक लोगो। ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ एन आइकॉनिक लोगो। इसके अंदर अगर आप ये भी निकाल दोगे, मतलब अगर ये लोगो मुझे पता चल गया, मैंने सब तरफ ये अपलोड किया है लोगो, इफ आई रिमूव दिस टेक्स्ट। ठीक है, अभी टेक्स्ट की इसको जरूरत नहीं है। आई कैन रिकग्नाइज यूजिंग दिस आइकॉन। ये आइकॉन देख के मुझे पता चलेगा कि ये दिस इज अ निंटेंडो कंपनी और दिस इज डिफरेंट, दिस इज अ सो एंड सो कंपनी। इसके हिसाब से यू कैन रिकग्नाइज द यूज ऑफ दैट लोगो। ठीक है, मतलब कहाँ पे भी अगर वो लोगो रहेगा आपको, तो ऐसे डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट किया आपने, इफ आई विल अटैच दिस लोगो एट द बॉटम, तो फिर ऐसे टॉप में कहीं पे तो लोगो लगाता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप वगैरह करता हूँ, या फिर आई विल फिल दिस डॉक्यूमेंट विद दिस, विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। मैक्सिमम जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके लोगोज रहते हैं कंपनीज के। अभी ऑफर लेटर वगैरह आप लोग ने देखा रहेगा, कोई कोई जॉब करता रहेगा तो उनको पता रहेगा कि ऑफर लेटर के अंदर जो रहता है वैसे लोगोज रहते हैं। जस्ट डिलीट दिस।
I will create a text filled with placeholder text. Okay, font जो है I will change this to Arial. I want the Arial font. यहाँ पे आएगा कंपनी का साइन, ठीक है, सिग्नेचर CEO, and managing director of CEO, managing director, Nintendo Studios Private Ltd. ठीक है, ऐसे कुछ साइन रहेगा. नेक्स्ट आई विल यूज अ पेंसिल टूल. पेंसिल टूल से just add the stroke to this. ठीक है, stroke ऐड करता हूँ. ठीक है, I will remove the hyphenations. ओके, तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच आई हैव क्रिएटेड. ऐसे टाइप का आपका डॉक्यूमेंट रहेगा कुछ. ऑफर लेटर मैंने क्रिएट किया है. इसका जो है अभी थीम बहुत सारे कंपनीज का अलग अलग रहता है. जस्ट आई हैव यूज्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर दिस. ठीक है, वी विल हैव अ कंपनी, वी विल हैव अ स्टूडियो का लोगो. नेक्स्ट द ऑफर लेटर. अभी डियर सर आएगा, रिस्पेक्टेड सर आएगा, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी. नेक्स्ट, अभी इसके अंदर जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा फॉर ज्वाइनिंग, लास्ट और द ज्वाइनिंग डेट. ठीक है, ज्वाइनिंग डेट रहेगा या फिर और कुछ आपका सैलरी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब रहेगा. नेक्स्ट, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू यू हैव बीन सिलेक्टेड. पोस्ट रहेगा आपका उसके अंदर सब. ठीक है, नेक्स्ट यू विल हैव द सिग्नेचर ऑफ द सीईओ एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, ऑफर लेटर में मैक्सिमम यहाँ पे वही साइन रहता है. ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका ही साइन रहता है यहाँ पे. ठीक है,
राइट या फिर लेफ्ट में। दिस अ फॉर्मेट फॉर एन ऑफर लेटर। ऑफर लेटर का फॉर्मेट ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। हो गया। You can create any type of documents, you can create the logos, you can create the letterhead, you can create the letters, different types of letters depending upon the work of the company, ठीक है। क्लियर है, एकदम इजी है। You have to design a logo, you have to design the text, you have to add certain alignments, ठीक है। मतलब वो एकदम अच्छे से दिखना चाहिए for the displays, ठीक है। नेक्स्ट you need to add some of the scripts, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है अभी ये सिग्नेचर के लिए मैंने अभी डायरेक्टली क्रिएट किया है। सम ऑफ देम क्रिएट स्क्रिप्ट्स, ठीक है। मतलब वो और दे डायरेक्टली इंपोर्ट द इमेजेस, ठीक है। वो इंपोर्ट करते हैं इमेजेस डायरेक्टली इनटू द डॉक्यूमेंट। उनके पास रेडीमेड रहता है, दे कैन इंपोर्ट द इमेज एंड दे कैन प्लेस इट एट द सेक्शन, ठीक है। जो आपका सिग्नेचर का सेक्शन रहेगा वहां पे वो लोग प्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। अभी इसके अंदर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन आई विल टेक योर अटेंडेंस। कुछ है किसी को डाउट? नो सर। कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है? एनीवन? ठीक है। सो with this we come to an end of this session. If anyone have any doubts you can ask. ठीक है, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना। ट्राई टू स्टडी ऑल ऑफ द टूल्स, ठीक है। जितना भी टूल्स मैं आपको सिखाता हूँ, जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है, ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू रिवाइज, ठीक है। लिख कर लो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। न्यू न्यू पॉइंट्स, या फिर कुछ आपको ऐसे लगता है कि इट शुड बी नोटेड डाउन, तो वैसे नोट डाउन करो उसको, सब सब लोग, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ, बाय।